Good morning, student, and welcome to the pharmacognosy lecture. In today's lecture, we are going to start with the fifth unit, first part, that is methods of extraction. So, we'll start with the definition. What is extraction? Extraction is the method of removing active constituent from a solid or liquid by means of liquid solvent. The separation of medicinally active portion of plant or animal tissue from the inactive inert component by using selective solvent. Okay, so extraction is a method of extracting, removing active constituent from the plant. Since we have started with the pharmacognosy 2, we are being noticed that हमने जितना भी पोर्शन लिया फार्माकोग्नोसी 2 में वो पूरा का पूरा प्लांट के मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पे डील कर रहा था कि वो सिंथेसाइज कैसे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनको आइसोलेट करने के क्या तरीके हमने फोर्थ यूनिट में देखा कि उनको आइसोलेट करना इज डिफरेंट है ना. आइसोलेशन इज अ डिफरेंट पार्ट. नाउ वी आर डिस्कसिंग इन द फिफ्थ यूनिट व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन. Okay, isolation and extraction, there are two different parameters of removing the active constituent. Okay, तो एक्सट्रैक्शन जो है वो एक कोर मेथड है जिसमें आपको किसी भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट का मिक्सचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं उसके साथ में, जो एक्सट्रैक्ट सॉल्वेंट हम जो यूज करते हैं उसको रिमूव करने के साथ, है ना. एक सेपरेशन, एक मैकेनिकल सेपरेशन मेथड है एक्टिव पोर्शन प्लांट और एनिमल टिश्यू में से निकालने का. In this method, the wanted component dissolved by use of selective solvent known as menstruum, and undissolved part is called as mark, है ना. तो मैं क्या, हम वी कैन से कि एक्सट्रैक्शन को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया. एक सेलेक्टिव सॉल्वेंट known as menstruum and undissolved part जो रह जाता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज मार्क, है ना. तो व्हाट द टर्म सेलेक्टिव सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट since that every substance is not solubilized in every solvent. हाँ, सब चीज पानी के साथ में सॉल्व एक्सट्रैक्ट होके बाहर नहीं आ सकती, सारी चीजें अल्कोहल के साथ नहीं हो सकती, सभी चीजें आपके एक ही सॉल्वेंट में डिजोल्व होके नहीं बाहर आ सकती, है ना. तो अलग अलग बहुत मेथड है किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट करने की. तो सेलेक्टिव सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सॉल्वेंट को मेंस्ट्रुम कहा जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रैक्शन. और अनडिजोल्व्ड पार्ट इज नोन एज मार्क. Say for an example, if you boil tea leaves with water, so water is a menstruum and undissolved part, the जो exhausted drug है जिसमें से extract निकल गया है उसे mark कहते हैं. After the extraction, unwanted matter is removed. Extract are prepared by means using ethanol or suitable solvent, है ना. By means using suitable solvent, ethanol and another suitable solvent use करके क्या आता है. Extract can be defined as preparation of food drug which contain all constant which are soluble in the solvent. हम extract को और simple language में कह सकते हैं कि extract ऐसा एक defined preparation है जो उसके अंदर सारे solubilized content उस particular solvent में solve होके बाहर आ चुके हैं, that is extract. मर्क, सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन फ्रॉम आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जो सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है. सब आपने लीफ बॉईल करी, लीफ को उसमें से सॉल्वेंट निकाल दिया, सॉल्वेंट लिया जो वो लीफ को एक्सट्रैक्ट कर रहा है. उसके बाद जो आपने फिल्टर किया तो वो जो लीफ फिल्टर ऊपर जो आया, फिल्टर जो आया वो रेसिड्यू, उसे हम मार्क कहते हैं. और फिल्ट्रेट जो नीचे आ गया उसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं. एंड मेंस्ट्रुम इज द सॉल्वेंट फॉर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन. Types of extract: dry extract, example is your belladonna. उसके अलावा soft extract which are like ointment, suppository, example of glycerized extract. And the third is a liquid extract which best example is tincture. What is the part which is responsible for the extraction and dissolution of extracted substance out of the disintegrated cell? The basic what we require for the extract is कि जो आपका dissolution जो है extracted substance जिसको हम extract करना है वो cell में से पहले बाहर आए. Dissolution of extracted substance out of intact plant cell by diffusion requires steeping and sweeping, है ना. दो important step है, steeping and sweeping. Penetration of solvent into the plant and cells and swelling of the cell, है ना. सबसे important है कि आपका जो solvent है वो plant के अंदर, वो जो cell के अंदर penetrate हो, है ना, और cell को swell कर दे.
एंड थर्ड सेकेंड स्टेप डिफ्यूजन ऑफ डिजोल्व एक्सट्रैक्टिव सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल. और जो एक्सट्रैक्ट है, जो सॉल्वेंट है, वो वंस जाके सेल को स्वेल कर लिया, उसके बाद उसके एक्टिव प्रिंसिपल को डिजोल्व करके सेल के बाहर लाना. Okay, so these two steps are called steeping and swelling. The swelling is your when the menstruum, when the solvent moves inside the cell, and steeping is when it comes out of the diffusion, which when the dissolved substance comes out of the cell. Plant constituent are present in the cell, therefore the solvent of extraction must diffuse into the cell, है ना, कि plant constituent जो अंदर है सेल के, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर उसको बाहर लाना है तो वो सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व हो, है ना. सॉल्वेंट यूज फॉर कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो पेनिट्रेट ही नहीं होगा. तुम बादाम को पानी के बजाय, तुम वाटर के बजाय तुम इफ यू keep in water for overnight for soaking, it is not going to soak, it is not going to swell because it doesn't allow it to penetrate inside okay, if you allow, if you put the almond in some other solvent, okay, so what is it, the choice is that वो solvent उसके अंदर जाने वाला solvent होना चाहिए, उसको allow होना चाहिए कि it should move inside the cell. Fine. The solvent used for extraction must diffuse. This is the most important. Should penetrate and should diffuse into the cell, because until unless it is penetrate, it won't get it won't get diffused out of the cell as well. Okay. What are the ideal property of a solvent? So we remember. So we can be very concise that there are two important steps. That is the solvent, choice of the solvent for the particular drug to be extracted. Okay. So what is should be the ideal property of a solvent? Be highly selective for the compound to be extracted. So one of the best first property of ideal solvent should be it should be highly selective. Okay. हमें अगर मुझे अगर प्लांट में से सेना में से सेनोसाइड निकालना है तो आई शुड नो दैट सेना ग्लाइकोसाइड है, और ग्लाइकोसाइड कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होकर बाहर आ सकता है. if I'm keep on extracting senna with alcohol or water or any other solvent, then no, like if I'm going to test it, मैं पूरी मेहनत करती रहूं उसके पीछे, फिर भी मेरा extract उसमें नहीं आएगा. मैं I'll failed if I'm going to do for hours and hours without having the knowledge of the choice of solvent. Not react with the extract compound or with the other compound present in the plant material. It should not react with the compound. Have a low price, very true, since if the solvent is very costly and we are extracting the drug for that solvent and keep on extracting without with the loss of the solvent, that is of no choice, that is of no use actually. Be harmless to man and to the environment. Be completely volatile. Should not mix up with water. It should be harmless to the environment and to the man as well. Sometimes we consume different type of extract, like in case of homeopathic drug, we say that we use its extract sometimes very raw form, and in case of Ayurveda also we sometimes we use drug extract as such. Okay, so we should know that it should be very harmless to the environment and to the human. Okay, and sometimes when we go for trials, okay, then it should be harmless. मुझे मुझे यही नहीं पता है कि वो सॉल्वेंट का इफेक्ट कैसा होगा. मैंने ड्रग एक्सट्रैक्ट कर ली, मैंने केमिकल टेस्ट लगा लिए, मुझे पता चल गया कि मेरी जो ड्रग में जो प्रेजेंट था वो इसमें एक्सट्रैक्ट होके आ गया है, बट मैंने यही नहीं देखा कि वो सॉल्वेंट मेरे इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करने वाली है. ओके, सो वी हैव टू बी very much assured that the solvent is harmless. Be completely volatile once the drug is been extracted. So we have to go for the removal of the solvent. So it should be volatile. Should not mix up with water. If we say there are different type of solvents, so we should make that the type of solvent we are using for the particular drug, it should not react with should not mix with the other type of solvent. So should have the big capacity in relation to extractive. The density of the solvent should be different from water density, should have minimum viscosity. If it is minimum viscosity, then the penetration rate is higher. Mechanism of extraction.
See, this is how the solvent, once step 1, plant cell, solvent is out. Step 2, the solvent is moving inside the cell. And then step 3, the solvent diffuses out of the cell by dissolving the active principle. Factors affecting extraction process. First of all, the nature of the drug. बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नेचर ऑफ द ड्रग, है ना. मैंने कई बार बोला कि नेचर कैसा है, ड्रग थर्मोलेबाइल है, थर्मोस्टेबल है ना. आपको बहुत ध्यान रखना कि मैं किसी भी ड्रग को बॉईल कर रही हूँ, बॉईल करने से क्या वो ड्रग टेम्परेचर स्टेबल है ना. ऐसा ना हो कि जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल है वो थर्मोस्लेबाइल है, तो उतना टेम्परेचर पर गर्म करने से वो डिटोरिएट हो जाता है ना, डीनेचर्ड हो जाता है. ओके, तो हमें टेम्परेचर, नेचर ऑफ ड्रग कैसा है, ओके, वो सॉल्वेंट के साथ में कैसे रिएक्ट करना है, उसके साथ उसको ट्रीट कैसा करना है. हम डिफरेंट, जब वी गो टू द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, विल कम टू नो दैट एवरी ड्रग कैन नॉट बी डिकॉक्स्ड. हर ड्रग को आप डिकॉक्शन नहीं कर सकते, बॉईल नहीं कर सकते हो. हर ड्रग को आप मर्सरेट नहीं कर सकते, हर ड्रग को आप परकुलेट नहीं कर सकते, हर ड्रग को आप सॉक्सिलेट नहीं कर सकते. तो नेचर ऑफ ड्रग डिफर्स. ओके, देन सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि सॉल्वेंट कैसा आपके ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कितना रेट में एक्सट्रैक्शन कर सकता है. ओके, टेम्परेचर, ओके, pH, particle size. Okay, so these are the important factors which affect the process of extraction. So here are the different methods of extraction. First is infusion, decoction, digestion, maceration, percolation, continuous hot extraction, supercritical fluid extraction, counter current extraction, microwave assisted, and eighth is extraction and ultrasonification. I didn't maximize the screen. I just forgot. Okay. So infusion. Fresh infusion prepared by macerating the crude drug for a short period of time with cold or boiling water. These are dilute solution of readily soluble drug. Okay. Fresh infusion usually fresh prepared किया जाता है, और इसमें करना क्या होता है कि आपको short period of time के साथ drug को hot या cold water के साथ में you have to leave the drug to macerate, soak. These are dilute solution, बहुत dilute रहते हैं, readily soluble constituent of crude drug हम मिल जाता है. जैसे infusion of orange, है ना, concentrated infusion भी हो सकता है, concentrated infusion of cassia. Okay, decoction. In this process, the crude drug is boiled with specified volume of water. Okay, इस पीरियड में आप ये जो प्रोसेस है, इसमें इन्फ्यूजन में आपको ड्रग को मर्सरेट करके रखना है हॉट या कोल्ड वाटर के साथ में. डिकॉक्शन भी वाटर के साथ किया जाता है, पर इसमें क्या है, आपको ड्रग को बॉईल करना है. सो नाउ हियर यू हैव टू कंसिडर नेचर ऑफ द ड्रग. ओके, सम ड्रग which are heat sensitive, so you can go for infusion when you have to keep it with water. Okay, but if a drug is stable, thermostable hai, heat like it can tolerate heat, so you can go for decoction. Okay, so what you're supposed to do, you are supposed to boil the drug with specified volume of water for a definite time. Then it is cooled and strained or filtered. The process is suitable for extracting water soluble, heat stable constituent. Okay, water soluble and heat stable. So these are the two important conditions you have to you have to maintain for decoction. Third is digestion. In this form of this is a form of maceration in which gentle heat is used during the process of extraction. Okay, so what you do, you have to provide gentle heat. Okay, you have to keep the drug solvent, then you have to give the heat for a small period of time, then you have to remove it, so there is a gentle heat. It is used for moderately elevated temperature, is not objectionable. The solvent efficiency of menstruum is therefore increased. एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉर्फिन, है ना, तो ड्रग की जो एफिकेसी है वो बहुत इंक्रीज होती है कि फॉर टाइम बीइंग आप उसको सॉल्वेंट को हीट प्रोवाइड कर रहे हो, देन यू आर टेकिंग इट आउट, देन अगेन यू आर मॉडरेट एलिवेटेड टेम्परेचर के साथ आप ड्रग को ट्रीट कर रहे हो. अनदर इज मैसेरेशन. Maceration is the process of solid ingredient are placed stoppered container. So you can see this is the stoppered container where the drug is placed with the solvent and allowed to stand for a period of time at least for 3 to 7 days with frequent agitation. Agitation means you have to agitate it. Okay. The mixture is strained through sieve or net. The murk is pressed and combined with the liquid clarified. Cleaning by filtration or by decantation is on standing is done. Okay, तो क्या करते हैं मर्सलेशन में, आपको जो भी ड्रग है
से फॉर अगर मुझे पोटैटो में से स्टार्च निकाला तो वी यूजुअली गो फॉर मर्सरेशन. सो वी आर सपोज टू डू, आपको सॉल्वेंट के साथ में ड्रग को 3 से 7 डेज के लिए कंटेनर में कैप लगा के फिल करके सॉल्वेंट रखना पड़ता है और फ्रिक्वेंट एजिटेट करना, मिक्स करना है उसको. ठीक है. इसमें फिर क्या करते हैं कि जब एक 3 डेज के बाद में आपने ड्रग को निकाला, उसको स्ट्रेन किया, और स्ट्रेन करना मतलब छाना, और मग को प्रेस किया, प्रेस करते हैं. ठीक है. और फर्स्ट है ना, एंड देन यू अगेन उसको सॉल्वेंट डाल के रख देते हैं. पहले बार में हम प्रेस नहीं करते, पहले फिल्टर कर लेते हैं. सेकंड टाइम में सॉल्वेंट डाल के डब्बे फिर से हम मर्सरेट करने के रख देते हैं. सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को निकालेंगे और मग को प्रेस करेंगे, एंड देन वी बी गोइंग टू कंबाइन दैट बोथ ऑफ देम. दिस इज कॉल्ड मैसेरेशन. Okay. Process of maceration, plant material. What is the important step we have to remember for the in case of maceration? That plant material should be cut or small coarse powder you can contain. Place in a closed vessel. So select the solvent added. है ना, आपको solvent selected solvent को पूरा उसमें डालना है. Allowed to stand for 7 days with occasional shaking. Then liquid strained off. आपको strain solid residue बच जाता है, उसको वापस से आपको सॉल्वेंट डाल के रखना है. देन उसको अगेन हम उसको स्ट्रेन एक्सप्रेस करेंगे, क्लैरिफाइड बाय, उसके बाद क्लैरिफिकेशन इज रिमूवल ऑफ द एनी टाइप ऑफ फाइबर्स और समथिंग. देन इट इज evaporated and concentrated. Type of maceration, simple maceration, double maceration, triple maceration. 3 maceration करते हैं. Simple maceration for organized and unorganized drug like tincture orange, tincture of lemon, tincture of squill. Double maceration, concentration infusion of orange. Triple maceration, maceration process be carried out with the help of heat or strings. For triple maceration, consider infusion of cassia, consider infusion of senna. Simple maceration, the extraction of drug with the solvent with several days shaking or stirring at room temperature. In this type of maceration, organized drugs are used. I hope you all know what are organized and unorganized drug. We have already studied in the very first unit of this chapter of this syllabus. Also, okay, so we must, for maceration we use for the choice of drug is organized drug. So here what types we see, kinetic maceration is carried out at room temperature like simple maceration. The difference being that the material is kept in constant motion. सिर्फ इतना है कि इसमें क्या जो भी रहता है वो constant motion में रहता है. Another is turbo extraction or vortical extraction. The drug is stirred in the menstruum. The drug is stirred in the menstruum with the high speed mixture or homogenizer. Okay. Theory of extraction with the solvent with the several days of shaking or stirring at room temperature. So this is where weight of the solute is W, diffusion constant is D, A is the surface area, solute interface, C1 is the interface, concentration of solute in bulk is C2, thickness of boundary layer is L, and theta is time. Theory of maceration. So there are different theories of macerations, and I hope that we are running out of the time, and we are going to discuss that tomorrow in this class. And thank you for today.